So once you apply for PCC to the chief MOFA, what is MOFA? Ministry of Foreign Affairs. आप किसी कंट्री के लिए भी अप्लाई करें, कोई क्राइम नहीं किया हुआ, actually submitting your request for PCC, don't go without appointment. अगर आपने कुछ भी ऐसा किया, and I have a big news for you in the end. Hello everyone, my name is Inayat and I'm your Pakistani Canadian vlogger, and I bring easy videos for you about going abroad, whether it's immigration or study or visit visa. I am in Saudi with a very important topic. So today I'll be speaking about police clearance certificate. By the way, this video is in Urdu and English, so make sure if you only speak English to hit the subtitle button for English translation. Make sure kare is video ko end tak dekhein, and I have a big news for you in the end. I decided to make a video on police clearance certificate. कहीं पे भी आपको ये information नहीं मिलेगी. So I've researched a lot. It takes me a lot of time to do the research and make this video. Let's start. It's a very easy process, yet it takes a lot of time. इसमें मैं आपको step by step process बताऊंगा, fees बताऊंगा, documentations बताऊंगा. So make sure आप वो करें. However, इसमें 4 steps हैं. Step number 1, जहाँ के resident आप हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आप सऊदी में हैं और आप यूके से हैं, पाकिस्तान से हैं, इंडिया से हैं, तो आप उस एम्बेसी में जाएंगे इन सऊदी. यहाँ पर आप जाके अपॉइंटमेंट के साथ जाइएगा. डोंट गो विदाउट अपॉइंटमेंट एंड डोंट गो विद इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट्स because they will send you back, and so you will lose about 15 to 100 riyals there. Number 1, that once you get the endorsement letter from that, with these documents, make sure to take these documents with you. The second step is to make sure कि ये endorsement letter आपने MOFA लेके जाना है. MOFA is step number 2. Again, you have to take an appointment for Ministry of Foreign Affairs to do the attestation. It will cost you about 30 to 90 riyals. आप सादात सर्विसेज से या सांबा ऑनलाइन बैंकिंग से आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और आप पे भी वहाँ से कर सकते हैं for Ministry of Foreign Affairs. I have listed all the locations in my description below, so I hope it will help you. Make sure you subscribe the channel को like करें. मेरा हर जगह नाम Instagram, Facebook, TikTok और YouTube पे इनायत रहमान प्रोडक्शन है, and I will bring very easy information so that you can move abroad, maybe UK, Australia, Canada, US or Europe. So let's get back. Step number 3 ये है कि you will go to any police station and submit your endorsement letter and request police clearance certificate from the chief of police department. However, यहाँ पर आपने division एक अलग है इनका. So you will have to submit the documentation for PCC. These documents you have to take it along with you. Try के आप appointment लेके जाएं, but आपको chief of criminal evidence division से मिलना है, and you have to give that to him or to her. आपको अपने biometric वहाँ पर जमा कराने होंगे. They will give you a receipt. Make sure don't forget or lose that receipt, because in 2 to 3 weeks when your PCC comes back, आपको वो receipt देनी होगी. If you lose that receipt, then make sure you go to the police station and inform them as well. Now, the last step is going back to MOFA and doing the attestation. However, my tip is not to do that. Go to the translation services. वहाँ से आप इस PCC Arabic में होगा, उसको English में translate कराएं. I've listed attested translators in my link below as well. उस document को देख लें. अब वहाँ से जब आप उसको ट्रांसलेट करवा लेंगे, फिर यू कैन गो टू MOFA एंड डू इट, ताकि आपके पैसे भी बचें एंड यू सेव टाइम एज वेल. नाउ आपने वहाँ पर जाना है, गिव योर PCC, बिकॉज लेट्स से इफ यू आर गोइंग टू कनाडा, यूके और यूरोप एंड इट्स इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री, आपको PCC चाहिए होगा इंग्लिश, नॉट अरबिक. सो वंस यू गेट द ट्रांसलेशन डन ऑफ PCC इन इंग्लिश, आप अटेस्ट करवाएं. अगेन इट विल कॉस्ट यू अ लिटिल बिट. नाउ इन द एंड आई वुड लाइक, अगर ये सब कुछ है जब आप सऊदी के अंदर है, अगर आप सऊदी में नहीं है, आप कहीं बाहर हैं, मे बी यूर लिविंग करेंटली, यू गॉट अ जॉब इन साउथ अफ्रीका, अब आपको 4 डॉक्यूमेंट चाहिए इन द स्टेप नंबर 1. अगर आपको PCC चाहिए फ्रॉम सऊदी, इफ यू लिव्ड इन सऊदी फॉर 6 months और 2 years, then you need a PCC from the country you're living in. Give the biometric with an authorized organization, which is VFS, and I can list that down. Feel free to message me and I can send you the list wherever you can give the biometric. You need a letter as to explain क्यों आपको PCC चाहिए, and an authorization letter of allowing a person कि ये so and so है, मैं इसको जो है allow करता हूँ कि ये मेरा PCC collect कर ले. So I hope you like this video. Make sure आप subscribe और like ज़रूर करिए, क्योंकि I will bring so many videos. You apply and go abroad with the help of any agent who might give you false information and waste your time and money as well. So I hope आपको वीडियो पसंद आई. अगर पसंद आई तो YouTube, Instagram, Facebook हर जगह like करें, subscribe करें, and thank you so much.